Hello everybody. Hope I am live. I hope you can hear me. Can you give me a if you can hear me? Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Just give me yes on the chat box. Hope you can hear me. So guys, today we're going to talk about another very important judgment, okay? That is State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu. In the last three classes, we have talked about very important judgment, Aligarh Muslim University. If you haven't checked those videos, can you do check those videos, okay? That will be very, very helpful. Now, I have made a video regarding top 5 most important judgment for your CLAT PG 2026. If you haven't checked that video, do check it. That video I have mentioned 5 most important CLAT PG video. Okay, important cases for CLAT PG 2026. Now, in this video, I'm going to talk about the second most important case. That is State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu. Okay. This case I'm going to talk about today. Previous classes I have talked about the case which name was Aligarh Muslim University. Okay. That case was very important too for all of you, for all of your understanding. Okay. But this case also very important. Okay. What I'm going to talk about. Now, this case is regarding Article 200 of Indian Constitution. Now, what is Article 200, by the way? Article 200 is regarding assenting to bill, giving assent to bill. No, sir, giving assent to bill matlab? It is regarding governor's power to assent to bill. Okay. So under Article 200, governor has been given power. Now, why this case is basically important? Why do you need to study this case? Okay. हम लोग ये केस को क्यों पढ़े सर? इस केस का इंपॉर्टेंस ये है, दिस इज 2025 केस, एंड इन दिस केस there are very major changes that have happened in Indian Constitution. बहुत major changes हुए हैं. क्या major changes हुए सर? Major changes in the sense, आप अगर आर्टिकल 200 को पढ़े हो पहले, if you have read article 200 already, or you are going to read article 200, because which I am going to explain to you today itself. So article 200 में governor has the power to assent to bill. Fine enough. But there are few restrictions or limitations that are there in governor's part or not that needed to be discussed. Sir, what kind of restrictions and limitations you are talking about? तो पहले हम लोग इसके चलते आर्टिकल 200 को एक बार देखेंगे, आर्टिकल 200 को समझेंगे, ठीक है? एंड we are going to deep down this particular understanding how this article 200 creating this case, article 200 से कैसे केस का जन्म हो रहा है. We are going to talk about this aspect. Okay. As we are talking about governor under article 200 assenting to bill, I hope many of you have read and known there is another same article which is existing in Indian Constitution. That is article 111 111. बोले सर उसमें क्या है? President. President simultaneously also have the power assenting to the bill. So there are two parts, president and governor. Now this case is primarily focusing on governor. Okay. So I'm going to talk about the facts of the case and the other aspect. मैं उसके बारे में धीरे धीरे करके बात करूंगा आप लोगों के साथ. But सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट कि आर्टिकल 200 है क्या. सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू शेयर कि व्हाट इज देयर इन आर्टिकल 200. देन आई विल एक्सप्लेन दैट आर्टिकल 200 and simultaneously I am going to explain certain veto powers, because veto powers need to be understood very very clearly, and then I'll get to the facts of the case. ठीक है, उसके बाद मैं फैक्ट्स ऑफ द केस में आपके साथ बात करूंगा. ये 3 थिंग्स दैट वी गोना टॉक अबाउट. बट उससे पहले मैं दोबारा आपको रिमाइंड करता हूं कि दिस केस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. आई हैव टॉक्ड अबाउट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ
for CLAT PG 2026. If you haven't checked that video, do check it. Okay. This is the second video I'm talking about. First class or the first case I have already done, in which I've talked about AMA. Now this Article 200, just wait for a moment. I'm going to share the screen with you regarding the Article 200, and if you open the bare text, आप खुद से भी bare text open कर सकते हो Article 200 के बारे में, ठीक है? And we are going to understand the Article 200 in detail. So what is there in Article 200, by the way? What is there in the Article 200 जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा? Sir, Article 200 में ऐसा क्या है? Assent to bill. Now, what is the main procedure of assenting to the bill? बोले सर, स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करते हैं, बिल पास करने के बाद गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसका असेंट करते हैं, एंड दैट बिल बिकम्स एक्ट. यू आर ट्रू. what have you known regarding this aspect? You are right. ठीक है, यही प्रोसेस है. बट देयर आर सर्टेन ट्विस्ट टू इट. कुछ ट्विस्ट है आर्टिकल 200 में एंड आर्टिकल 201 में, उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. सो आर्टिकल 200 में there are few things that needed to be understood. So one is very clear regarding that what you have or what you know, what I have talked about just. So you are very well aware. तो मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा and you are going to tell me whether it's feasible or not. I hope it's feasible to all of you whatever I have shared with you. ठीक है, ये शायद आप लोग देख पा रहे हो आर्टिकल 200 में क्या क्या है. If you see Article 200, if you open your bare text, you'll be able to see it also. So Article 200 में assent to bills, governors power to assent to bills, that is there. Now, when a bill has been passed by the Legislative Assembly of a state, in the case of a state having a legislative council, has been passed by both houses of the legislature of a state, it shall be presented to the governor, and governor shall declare either that he assents to bill or that he withholds the bill or he reserves the bill for consideration for the president. So if you see Article 200 subjective part, if I say the Article 200 subjective part, the first part, the subjective part I'm talking about, the first part of Article 200, first part, subjective part. Yeah. In the subjective part of Article 200, it is very simple. It is mentioned that a bill, when it's passed by the state legislature, and if any state having two houses, the legislative assembly and legislative council, if both the houses pass that bill, went to the governor, then governor has three options to choose. Sir, कौन से चूज करना है? Three options. Prima facie, three options. Why I'm saying prima facie, you'll get to understand. जब मैं केस के बारे में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा क्यों मैं ये तीन prima facie वर्ड यूज कर रहा हूं. So prima facie, there are three options to choose from. So what are the three options? एक, whether he assents to bill. Assents to bill means he gives assent to bill. Bill becomes an act. Assenting to bill. Second, withholding the bill. Withhold means rejecting, you can say it. Okay, withhold the bill, withhold the assent therefrom. Okay, so second is withhold, and third is presidential reconsideration. Okay, if he kept it for presidential reconsideration. So that what prima facie the three options that are there for governor. So कोई bill अगर governor के पास जाता है after getting passed by the legislative assembly of the state, then the governor has three options to choose from. ठीक है, either bill को assent कर देगा, either withhold कर सकता है, और either reserve the bill for the consideration of the president. That what is basically known. ठीक है, यही इस मेन चीज है. ठीक है, इसमें ज्यादा प्राइमा फेसी और ज्यादा कुछ लिखा नहीं है. दिस इज द थिंग. Now there are two provisos under Article 200 which is needed to be understood also. Proviso is also very clear. Okay, proviso में पहला proviso क्या बोलता है? The first proviso, the governor may, as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent, return the bill if it's not money bill together with a message requesting the house or houses will consider the bill or any specified provision thereof. In particular, he will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a bill is so returned, the house or houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again, the governor is going to give his assent. Now here, in the proviso,
what the next part. Now, when suppose governor के पास bill गया and after presented the bill to governor, governor suppose return the bill. Okay. Now here there is one very important catch. Okay, that I'm going to talk about the veto power. Now, when governor returned the bill to the state legislature, in that case, it is very simple. State legislature is going to reconsider the amendment whether needed to be incorporated within the bill or need not to be incorporated within the bill. Very simple. So state legislature अगर incorporate करते हैं उस चेंजेस को जो गवर्नर ने सजेस्ट किया या नहीं भी कर सकते हैं. उसके बाद अगर दोबारा बिल को पास करते हैं एंड इफ इट सेंड टू अगेन गवर्नर, अगर वो दोबारा गवर्नर के पास सेंड करते हैं, देन इन दैट केस द बिल इज बेसिकली गेटिंग द एसेंट ऑफ गवर्नर. क्योंकि सेकेंड टाइम गवर्नर एक बार विथहोल्ड करने के बाद सेकेंड टाइम विथहोल्ड नहीं कर सकता है. गवर्नर हैज टू गिव हिज एसेंट. Second time it is sent back to him. Okay, so that is the first proviso talks about. Second proviso of Article 200. Second proviso talks about that agar governor shall not assent to the bill, in that case shall reserve for the consideration of the president. So president के consideration के लिए reserve कर सकता है. When if he thinks, in the opinion of the governor, if he thinks it become a law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that court is by constitution designed to fill. So if there is any kind of derogation of law as a result mandate of the constitution for High Court is getting breached, in that case governor can send the bill to president reconsideration. इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कमिंग क्लासेस में, ठीक है. बट आर्टिकल 200 में अगर आप देखोगे, इफ यू सी आर्टिकल 200, तो देयर आर मोटा मोटी 3 ऑप्शंस. सर ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें. 3 ऑप्शंस है. कोई बिल गया सर गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है. एसेंट, विथहोल्ड, प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन. एसेंट दे देता है तो बिल लॉ बन जाता है. अगर विथ होल्ड करके रिटर्न करता है तो लेजिस्लेचर को चेक करना पड़ता है वेदर टू इंक्लूड दैट एंड वेदर नॉट टू इंक्लूड दैट. एज सिंपल एज दैट. सो इफ इट इज included, not included, if it is repassed by the state legislature again and send it back to the governor, governor के पास कोई चारा नहीं है. Governor has to accept the bill, okay, and assent the bill, it will become law. Third, अगर गवर्नर सोचता है इन सब्जेक्टिव ओपिनियन कि दिस बिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल डेरोगेट द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट as mandated by constitution, in that case it can send it for presidential expression. These are 3 options that are there. Now अगर कोई चीज ये बताया गया अंडर आर्टिकल 201, दिस प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन का नेक्स्ट पार्ट आता है. सो नेक्स्ट पार्ट मतलब बहुत सिंपल है. अगर एक बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया एंड आफ्टर दैट व्हाट गवर्नर प्रेसिडेंट नीड टू डू, प्रेसिडेंट को क्या करना है उसके बाद, व्हाट प्रेसिडेंट नीड्स टू डू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद का प्रोसीजर क्या है वो आर्टिकल 201 में आता है. सो लेट्स गेट बैक टू आर्टिकल 200. मैं आर्टिकल 201 दिखाता हूं और आप भी आर्टिकल 200 एक बार खोल सकते हो आपके बेयर टेक्स्ट से. सो आर्टिकल 201 अगर आप देखोगे, ओके, आर्टिकल 201 अगेन देखो, बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन. So Article 200 is kind of a sub part of the Article 200, which has basically talked about the 3 option given to governor. So governor के पास जो 3 ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो थर्ड ऑप्शन अगर गवर्नर एग्जीक्यूट करता है, then what would be the process for the bill in that case? That what is being talked about in Article 201. So Article 201 में सिंपल चीज है. When a bill reserved for by a governor for the consideration of president, the president shall declare either that he assented to the bill or he withhold the assent therefore. तो president के पास भी 2 options है, either he assents or withhold the assent. Now the most important thing,
if you withhold the assent, in that case one proviso has been laid down. क्या प्रोवाइसो क्या है? अगर बिल मनी बिल नहीं है तो प्रेसिडेंट उस बिल को वाया गवर्नर फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा. प्रेसिडेंट इज गोइंग टू सेंड दैट बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर वाया गवर्नर. For what? If any necessary changes or amendment needed to be done, what has been said by president. So president ने जो जो चीज बोला है amendment करने के लिए, उस amendment को incorporate करने के लिए, the president is going to send that particular bill to legislature. अब again, legislature has option whether to incorporate those change or not to incorporate those change. If it incorporate those change, fine enough. Again, it is passed. Send it back to president and president will take the matter again. Okay, that's how the article 201 talks about. Okay, so article 200 and 201 I have talked about first superficially. Okay, why I told superficially, you will get to understand, because there are very other metrics will come after this particular thing. ठीक है, बहुत सारा चीज है ये आएगा. बट आई होप यू अंडरस्टूड आर्टिकल 200 एंड 201. मुझे पता है कि आप लोगों को पहले से भी आर्टिकल 200 201 पता है. ठीक है, इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ठीक है, आर्टिकल 200 और 201 जानने के बाद हम लोग अगर केस के बारे में जानते हैं, ठीक है, और कुछ पावर के बारे में जानते हैं. सो इफ यू नो, as I talked about, there is an article called article 111 that is for president. ठीक है, कि president's power to assent to bill. If I open that power, open that particular, if you open that article 111, you'll get to see similar process can be found for the president also. But the most important thing is that the president power that is laid down or given in relation to this, okay, there are certain other criteria that is there. अदर क्राइटेरिया मतलब सर, सो आर्टिकल 111 के अंदर प्रेसिडेंट के कुछ वेटो पावर होते हैं. ठीक है, तो अभी मैं वेटो पावर के बारे में बताऊं बिफोर गेटिंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस. तो फिर मुझे फैक्ट्स ऑफ द केस समझाने में आप आसान हो सकता है. ठीक है, सो बिफोर गेटिंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस आई विल शेयर वीटो पावर. वीटो पावर मतलब सर क्या होता है प्रेसिडेंट का? सो प्रेसिडेंट हैज सर्टेन वीटो पावर. There are four kind of veto power that you can generally see with the president. चार क्या क्या veto power है सर? एक है absolute veto, absolute veto, then pocket veto, then suspensive veto, and then qualified veto. इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं. ठीक है, सो इन वेरियस इंस्टेंसेस, एज यू पीपल आर अवेयर, एब्सोल्यूट वेटो मतलब अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जा रहा है, इफ द बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली रिजेक्ट दैट बिल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेटो. व्हेन प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली रिजेक्ट द बिल. पॉकेट वेटो, पॉकेट वेटो मींस व्हेन प्रेसिडेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन एट ऑल. प्रेसिडेंट के पास बिल गया, प्रेसिडेंट ना उसको रिजेक्ट किया ना असेंट दिया, नथिंग, ही इज सिटिंग ऑन द बिल और शी इज सिटिंग ऑन द बिल, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वेटो. मतलब पॉकेट में डाल दिया, ये बोला जाता है आपके याद रखने के लिए, पॉकेट में डाल दिया, नथिंग, नो एक्शन इज टेकन, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वेटो. ओके, सस्पेंसिव वेटो, सस्पेंसिव वेटो इज व्हेन प्रेसिडेंट रिटर्निंग द बिल फॉर repassing the bill. तो प्रेसिडेंट लाइक गवर्नर एज यू हैव सीन अंडर आर्टिकल 111, अगर आप देखोगे वहां पर भी प्रेसिडेंट विल रिटर्न द बिल with some amendment or changes that needed to be incorporated, what president feels to be included in that particular bill. Okay, so usko send kiya gaya. In case of suspensive veto, the bill again repass, in that case president has to give assent.
in the next step. As simple as that for suspensive veto. ठीक है? So absolute veto, pocket veto, suspensive veto, these are the three part. Absolute, absolutely rejecting. Pocket, taking no action at all. Suspensive, withhold and send it back. Withhold and send it back to the legislature, and it will come back again, then giving the assent also. This is what all the three things are all about. Now, when the absolute, pocket and suspensive veto are there, I hope you are understand. Let me check, is there any query or anything that you have or not? ठीक है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ. Okay, let me see the chat box. If you have any query, do let me know in the chat box. Okay, by the way. So, as you are understanding this particular part, okay, अगर आप लोग समझ पा रहे हो आर्टिकल 200 and 201, which is very very good. ठीक है, आप लोग समझ पाए. Now the most important part, अभी हम लोग बात करेंगे. You have seen the veto power, you have seen the article 200, 201. ठीक है, likewise मैं article 111 आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ. For your perusal, you just, I hope you are aware. फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं. ठीक है, बट मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज नॉट रिगार्डिंग आर्टिकल 111 बाय द वे. ठीक है, हम लोग का जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो आर्टिकल 200 से आते हैं एंड आर्टिकल 201 से आते हैं. दैट्स ऑल गाइस. सो इफ यू सी आर्टिकल 111 which is very similar. Okay. When a bill has been passed by the House of Parliament, it shall be presented to the President. President shall declare either he assents to the bill or withhold assent therefrom, provided that President may, as soon as possible, after the presentation to him of a bill, assent, return the bill if it's not a money bill with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provision thereof, will consider the desirability of introducing any such amendment as he may recommend in his message. When a bill is so returned, the House shall reconsider the bill accordingly. And if bill is passed again by the House with or without the amendment, the presented to the President shall not withhold the assent therefrom. So it is very simple. It is there. ये जो है इसके साथ साथ आप आर्टिकल 200 का बहुत सिमिलरिटी आपको मिलेगा. इट्स नथिंग रॉकेट साइंस, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं. दोनों हाउस में बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा. प्रेसिडेंट इज गोइंग टू गिव द असेंट. It will become act. If president send it back to legislature, the houses again. Okay, the houses either while reconsidering the amendment or changes that are forwarded by president, उसको incorporate कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. And if it again passed, send it back to president. President has to give assent. As simple as that. That's what Article 111 talks about. But I have told you three vetoes with you. I have told you three vetoes. That veto is regarding the president, by the way. ठीक है, that I have told you. But to extent, sometimes it is thought regarding the governor, some vetoes are also there. But there is another veto for president which I'm going to talk about now. That is called qualified veto. Qualified veto में क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूँ आपको. ठीक है, qualified veto is sometimes in regards to Article 201. Okay, Article 201, it's kind of qualified veto. You can see that. Okay. So qualified veto Article 200 मतलब sir, if you see that state bill जब president के पास आता है via governor, okay, so when a state bill go to president via governor, president will say some changes to be incorporated. Then it is sent back to again the legislature. And when it's sent back to the legislature will incorporate it and send it the bill via governor to president. In that case, Article 201 is very silent. Silent regarding के सर, अगर लास्ट लाइन आप पढ़ोगे आर्टिकल 200 के, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू अगेन टू प्रेसिडेंट फॉर हिज रिकंसिडरेशन, तो उसको दोबारा प्रेजेंट किया जाएगा. सो इट वाज प्रिज्यूम द लॉ वाज समथिंग लाइक दैट कि प्रेसिडेंट शायद इस बिल को नेक्स्ट टाइम असेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. इट इज वेरी वेग इन दैट केस. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड वेटो इन दैट केस. इट इज क्वालिफाइड वेटो. नाउ
The most important part here you need to understand this Article 201 is not a final product. Article 20 to 201, the last sentence talked about it shall be presented again to President for his consideration. That's all. अगर आप आर्टिकल 1 देखो, presented to the president, what is the last line? The president shall not withhold assent therefrom. It is clear. Article 201, it shall be presented to the president for his reconsideration. Is there anything? He shall not withhold the assent or something? Nothing is there. And that's why Article 201 is kind of an open-ended. इसका लास्ट जो वाला सेंटेंस जो है उसमें कुछ दिया नहीं है. And that's why it has created a lot of vagueness in the mind of legal readers and the judges कि अगर दूसरी बार वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, लेजिस्लेचर सारे चेंजेस करने के बाद, रिपास करने के बाद, whether president is going to accept it or president again can sit on the bill और उसको withhold फिर दोबारा कर सकता है. Can it be done? So here interpretational understanding is lacking regarding the Article 201. I hope you're understanding whatever I'm talking about. ठीक है, शायद आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. तो लास्ट लाइन कुछ मेंशन नहीं है. नाउ ये है मोटा मोटी कॉन्सेप्ट का मैं एबीसीडी आप लोगों को समझाया. द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिक्वायर फॉर स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, आई हैव गिवन यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस. ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को दिया रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट. अभी मैं आपको लेके जाऊंगा द जजमेंट इटसेल्फ. अभी जजमेंट में आपको मैं दिखाऊंगा फैक्ट्स ऑफ द केस and the major issues that are coming up regarding the Article 200, Article 201 that I'm going to talk about. ठीक है, I hope it's clear. Give me a clear. Type clear in the chat box. Type clear in the chat box if you have understanding. Okay, and if you have any doubt, share in the chat box. ठीक है, मैं थोड़ा chat box देख लेता हूं if you have had any kind of query as such or not. Okay. And I hope yeah there is no chat as of now. Okay, तो मैं अभी जाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा that particular case उसके fact and then I'll move on to the next part. ठीक है, मैं next part में move on करूंगा facts of the case and how the problem at hand. मैं हमेशा बोलता हूं अगर problem को आप अच्छे से समझोगे ना आंसर तो उसके अंदर ही है, बट अगर आप problem को नहीं समझोगे आंसर आप ढूंढते फिरोगे, you will never get the answer. Correct answer is in the problem. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इटसेल्फ. तो प्रॉब्लम को देखते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है एंड इश्यूज एट हैंड. सो आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, दिस इज द केस. नाउ this is the factual metrics of the case, submission of the parties, issues, assent to bills, background, and a lot of things. It's a very huge case, by the way. The conclusion: the J. Pardiwala has authored, Justice Pardiwala has authored this particular judgment. It is 387 pages. Okay, that we are understanding. So even probably more than that. हाँ, more than that. 387 400 पेज के केस है ये. हम लोग उसी केस को पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंगली एंड डिटेल में. Each and everything we are going to understand. Now, facts of the case is very important for our understanding and for our issue perspective. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है. Now, अगर आप फैक्ट्स देखोगे, फैक्चुअल मैट्रिक्स में ना बहुत सारे पार्ट हैं guys. Factual background with respect to assent to bills, factual background with respect to accord of sanction, factual background with respect to files and partnering to premature release of prisoners, Tamil Nadu Public Service Commission, and allocation. These things are there in relation to factual metrics. हम लोग का मेन पार्ट है फैक्चुअल मैट्रिक्स में ये 2 3 4 5, इसको थोड़ा साइडलाइन करेंगे. जो फैक्चुअल मैट्रिक्स एक है ना उसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है, वी गोइंग टू फोकस ऑन दैट थिंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. फैक्चुअल मैट्रिक्स में हम लोग जाते हैं. फैक्चुअल मैट्रिक्स में हम लोग जब जाएंगे, आई विल जस्ट टेक यू टू द फैक्चुअल मैट्रिक्स टू असेंट टू द बिल.
आई होप यू कैन सी इट। मैं अभी थोड़ा रीड आउट करूंगा। वाई रीड आउट? बिकॉज फैक्ट नीडेड टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली, और मैं एक एक सेंटेंस को फैक्ट से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द फैक्ट्स। ठीक है? बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स वेरी वेरी क्लियरली, यू विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल इश्यूज में कैसे प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, वो भी फैक्ट में ये भी आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 200 एंड द फैक्चुअल मैट्रिक्स हाउ बोथ आर गेटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट समझ में आएगा, इश्यूज अपने आप आपके समझ में आएगा, एंड उसी उसके प्रॉब्लम हम लोग ढूंढना आसान हो जाएगा। ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्चुअल बैकग्राउंड इन रिगार्ड्स टू दैट। इट्स अ केस रिगार्डिंग लेजिस्लेचर फॉर स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो बिटवीन 13 जनवरी 2020 टू 28 अप्रैल 2013, मतलब 3 साल 3 महीने मान लो आसपास, या उसके अंदर तमिलनाडु हैज इनेक्टेड 12 बिल्स। ओके? पास 12 बिल्स, फॉरवर्डेड 12 बिल्स टू गवर्नर। 12 बिल पास किए, गवर्नर को सेंड किया गया फॉर ग्रांट ऑफ एसेंट एज पर आर्टिकल 200। सो पहले आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैं आर्टिकल 200 आपको पढ़ाया। सो आर्टिकल 200 के अंदर 12 बिल सेंड किए गए थे, तमिलनाडु गवर्नमेंट पास करके गवर्नर को सेंड किए थे एसेंट देने के लिए, सो दैट दैट बिल विल बिकम एक्ट। नाउ, even though the present governor took charge of the office with effect from 18th November 2021, so current governor जो है अभी, ठीक है, जिस टाइम ये जजमेंट was authored or the issue emerged, उस टाइम गवर्नर took the charge from 18th November। so आप मान लो 13 जनवरी के 2020 और 18th नवंबर, दैट इज अराउंड 18 मंथ्स के टाइम, 18 मंथ्स बाद गवर्नर आए ऑफिस में, जो नए गवर्नर है। नाउ, yet he did not take necessary action on any part of the said bill forwarded to his office till October 2023. But उन्होंने अक्टूबर 2023 तक कोई भी बिल के बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप देखोगे आर्टिकल 200 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 200 में देयर आर 3 ऑप्शंस आर देयर इन रिलेशन टू इट। इफ यू गो एंड ओपन इट आर्टिकल 200, सर अगर आर्टिकल 200 हम लोग देखें तो आर्टिकल 200 में तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, 3 ही ऑप्शन है गवर्नर के पास। एक, असेंट टू बिल, विथहोल्ड द बिल, रिजर्व द बिल। यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर गवर्नर कुछ एक्शन ना ले। मैं आपको 4 वेटो पावर के बारे में बताया था, उसमें से एक वेटो पावर था पॉकेट वेटो। उस पॉकेट वेटो के अंदर मैं क्या बोला था, व्हेन प्रेसिडेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन। तो सेम पॉकेट वेटो गवर्नर के लिए आप सोचो, गवर्नर का पॉकेट वेटो, गवर्नर डिड नॉट टेक एनी एक्शन, नथिंग। So here in this case, the most important aspect you are understanding probably ke whether governor has pocket veto or not, sir, under article 200। क्योंकि यहां पर तो कुछ बोला नहीं गया है सर आर्टिकल 200 के अंदर कि गवर्नर will sit on the bills without taking any action or not, nothing has been written। but here in the facts of the case, governor took did not take any action till October 2023। October 2023 से कोई एक्शन, मतलब लगभग लगभग नवंबर 18 अक्टूबर 2023, 2 साल तक गवर्नर ने कुछ एक्शन नहीं लिया उस 12 बिल के बारे में, 12 बिल्स, नथिंग। Petitioners being aggrieved by the inaction on the part of the governor had to ultimately file the present petition before the court 31st October। The court issued notice to the respondent, the governor forthwith took a decision। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि गवर्नर जी एक्शन ले लीजिए आप, यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजन रिगार्डिंग द बिल। देन गवर्नर टुक द डिसीजन। क्या डिसीजन लिया? गवर्नर टुक द डिसीजन ऑन द 12 बिल्स on 13th November by withholding assent simpliciter to 10 bills। He did not convey any message, okay, and reserving the 2 bills for consideration for president। अब समझना क्या किया है गवर्नर ने। गवर्नर ने जब
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश माना, एंड देन गवर्नर टुक द डिसीजन कि चलो 12 बिल जो 12 बिल्स पेंडिंग है उसके बारे में तुरंत डिसीजन लेते हैं। अच्छा, क्या डिसीजन लेना है? आउट ऑफ 12 बिल्स, 10 बिल्स ही डिड नॉट कन्वे एनी मैसेज। विथ होल्डिंग एसेंट सिंप्लिसिटर, इसका मतलब मैं थोड़ा बताता हूं आपको। विथ होल्डिंग एसेंट सिंप्लिसिटर मतलब, मैं आपको अभी आर्टिकल 200 दिखाया। आर्टिकल 200 में अगर आप देखोगे, देर आर 3 ऑप्शंस। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड रुकना, 1 सेकंड। So I hope you can hear me. Okay. So now I'm going to talk about the next part. Okay. Now I'm going to talk about the next part. मतलब what I was talking about. So governor के पास जो 3 situation है. Okay. So that 3 things that I'm going to talk about. So 3 things that I'm going to talk about is, if you have seen, okay, if you have seen, as per governor, governor has 3 options to take: assent, then withhold and return, and third is presidential reconsideration. So 3 things: assent, withhold and return, and third is presidential reconsideration. These are the 3 options that are available to governor. Now the most important part here, if you understand, here governor out of 12 bills, 10 bills के बारे में he withhold assent simpliciter. What it means, he withheld the assent, he rejected the bill absolutely without sending it back to legislature. He did not convey any message to legislature. What does it mean? ये मीन कर रहा है कि टोटल withhold विदाउट एनी रिटर्निंग टू लेजिस्लेचर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गवर्नर executed his option as withhold but no return। बट सर एज पर तो प्रोवाइसो रिटर्न करना जरूरी है, बट ही डिड नॉट रिटर्न। लेजिस्लेचर को रिटर्न नहीं किया, विथ होल्ड करके रख दिया। ओके। और 2 बिल आउट ऑफ 12, 2 bills sent for presidential reconsideration, that can be done। So this is very important thing. Withheld is without any message to the state legislature for the reconsideration, मतलब absolute rejection, absolute rejection। Now the most important thing, okay, state legislature इस 10 बिल को जब रिजेक्ट किया गया by the governor, the state legislature did one very simple thing. State legislature convened a special session, repassed the 10 bills which were written by the governor after withholding the assent. The bills were passed without any material change because governor did not mention any change. Governor कुछ mention किया ही नहीं change के बारे में, governor सिर्फ withhold कर दिया। Now we're forwarded to governor again on the same day। अब बताओ, जो 10 बिल गवर्नर withhold किए थे स्टेट लेजिस्लेचर, उसको दोबारा पास करके सेंड कर दिया। Okay. Now, the moment that is done, if you see it, on 18th November, 28th November, 18 बोल रहा हूँ, 28th November,
governor without aid and advice of the council of ministers reserve the said repassed bill for consideration for the president. अब गवर्नर क्या किए, जो 10 बिल पहले विथहोल्ड किए थे, स्टेट लेजिस्लेचर पास्ड अगेन, सेंड इट बैक टू गवर्नर. अब जब दोबारा सेंड किया गया गवर्नर के पास, गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया. अब बोलोगे सर, एक मिनट, अब बोलो सर, अगर नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, सर पहले क्यों नहीं भेजा? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So governor did not send those 10 bills for presidential reconsideration in the first instance. He sent it in the second instance. अगर हम लोग आर्टिकल 200 को एक बार देखेंगे, आर्टिकल 200 is very clear in few things. If the bill is sent to legislature and legislature again pass that bill, send it back to governor, गवर्नर shall not withhold assent therefrom. गवर्नर उसका assent देना ही पड़ेगा next time it is come to governor. But here when next time आया, governor sent it to presidential reconsideration. गवर्नर assent दिया ही नहीं. अब गवर्नर assent दिया नहीं, but as per the proviso of article 200, that is the logical next step will follow. That was the constitutional mandate. But what governor did, governor took another option in between. But the question is here, can governor do that? Can governor send a bill after returning the bill to the legislature to the president reconsideration in the second instance? एक बार स्टेट लेजिस्लेचर को बिल चेंजेस या विथहोल्ड करने के बाद, सेंड करने के बाद, अगर रिपास होके फिर दोबारा गवर्नर के पास आता है, कैन गवर्नर सेंड दैट बिल टू प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है. सो गवर्नर सेंड कर दिया. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन के लिए सेंड करने के लिए गवर्नर विदाउट टेकन एनी एडवाइस फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर. बोले सर यहां पर लिखा हुआ है इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर. या इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर, बट इज इट द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर और इज इट नॉट? Clear? So this very important part that needed to be understood here, कि governor कोई opinion ला ही लेके, I mean no opinion is taken in that case, okay, from chief minister and the council of minister, send it to president. Now as per article 163, if you see it, governor has to take the assent. Governor has to take the assent in this. Governor has to act in aid and advice of the council of ministers. But there are some discretionary powers also there of governor. But whether that discretionary power is included here or not, that is also very important thing. So let's move on to the facts of the case more. Now, governor to send कर दिया 10 बिल को next time. The letter of the governor to the union government referring the said bills for the consideration, ठीक है, that bills were reconsidered and passed again by the state legislature. But interestingly, governor एक लेटर में लिखा कि देखिए this bill are intra-virus of competence of the legislature having been legislated under the entry 66, entry 32 and entry 25. Yet he reserved the bill for consideration in the second round on the ground that the bill suffered from repugnancy on the account of being contrary to entry 66. Now you need to understand, गवर्नर बोला कि देखिए ये जो बिल है, ये बेसिकली दिस बिल इज मैटर ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग ये बिल है. एंट्री 66, एंट्री 32 एंड एंट्री 25 ऑल आर रिगार्डिंग द एजुकेशन.
ना एजुकेशन के बारे में ना स्टेट एंड यूनियन दोनों के पास पावर रहता है। ओके, स्टेट एंड यूनियन दोनों के पास पावर रहता है। बोले कैसे पावर रहता है सर? कि हियर इफ यू अंडरस्टैंड, ओके, कि अंडर एंट्री 66 यूनियन हैज द पावर, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। एंट्री 32 इनकॉर्पोरेशन वाइंडिंग अप यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट हैज द पावर। ओके, एंट्री 25 कॉन्करेंट लिस्ट, अगेन यूनियन स्टेट दोनों एजुकेशन के ऊपर काम कर सकते। सो एज ए रिजल्ट there are so many cases, you will find in the constitutional law under the doctrine of repugnancy. Doctrine of repugnancy मतलब जहां पर एक लिस्ट के टॉपिक के ऊपर दूसरा लिस्ट के टॉपिक इतना क्लोजली मर्ज हो रहा है, समटाइम्स द डोमेन क्लैश होता है। ओके, स्टेट डोमेन एंड यूनियन डोमेन सब्जेक्ट मैटर क्लैश होने के बाद the law sometimes breach the boundary of some other domain. Now, here in this case, regarding the education matter, governor what reason he has given कि second time ना मैं प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन के लिए सेंड कर दिया, क्योंकि ये बिल जो था 10 बिल, ये 10 बिल बेसिकली रिपग्नेंट था यूनियन बिल से और यूनियन लिस्ट से। एज ए रिजल्ट दिस बिल नीडेड टू बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन। ना आप बोलोगे सर ऐसे गवर्नर कैसे सेंड कर सकता? इट्स अ वेरी फेयर थिंग, बट दैट व्हाट गवर्नर हैज डन। ओके, no, so these are the bills that has been mentioned. Fisheries University Amendment Bill. Okay, so here it is mentioned, देखो गवर्नर कैसे बोलता है, I am directed to state that Tamil Nadu Legislative Assembly has passed this bill and Honorable Governor has written the bill with the following remarks. I withhold assent. That's how it is done. That's how it is done. Very clearly. Okay. So, Governor via reasoning of repugnancy send the bill for presidential reconsideration. क्वेश्चन आता है कि सेकेंड टाइम बिल जब गवर्नर के पास आता है फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर, एज पर आर्टिकल 200 गवर्नर को असेंट देना होता ही है। कैन गवर्नर सेंड इट फॉर प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन इन द सेकेंड टाइम? With logic, without logic, that's a totally different thing. Can governor act against the constitutional mandate? Clear? I hope it's clear to all of you. Okay. Now, you can see the union list, state list, and this thing. Okay. Governor also sought to clarify that the 10 bills to which he had withheld the assent simpliciter were not returned to the legislature for reconsideration as stipulated. Governor ये भी बोला कि the 10 bills that were rejected in the very first instance, those were withhold assent simpliciter. It means उसको सेंड नहीं किया गया था लेजिस्लेचर में. So Article 200 proviso is not going to be applicable. क्योंकि आर्टिकल 200 प्रोवाइसो एज पर गवर्नर व्हेन इट विल बी एप्लीकेबल, जब उसको सेंड किया जाएगा और वो वापस आएगा गवर्नर के पास. इफ इट इज नॉट सेंट एंड रिटर्न बैक, बिकॉज गवर्नर इज सेइंग इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस इट इज रिजेक्टेड, governor took a new course of action under article 200 that is rejected without sending back to the legislature. In that case, प्रोवाइसो 1 के जो फॉलोइंग प्रोसीजर है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टेड फॉर गवर्नर. दैट व्हाट गवर्नर इज सेइंग. नाउ दिस क्लैरिफिकेशन वेर सेंड फॉर ऑल 10 बिल्स. ओके, ऑल 10 बिल्स के लिए क्लैरिफिकेशन सेंड किया गया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
During this tussle between the chief minister and the governor, they're trying to sort out the deadlock. Okay. Chief minister is saying whatever the action that has been taken by governor is violative of Article 200. Because first, governor sat on the wheel for 2 years, did not take any action, pocket veto करके रखा हुआ. Second, governor withhold the bill. Simpliciter, एसेंट नहीं देकर रिजेक्ट कर दिया गया है, रिटर्न भी नहीं किया है. एंड गवर्नर के पास दोबारा बिल जाता है तो दैट बिल हैज टू बी असेंटेड बाय गवर्नर. हाउ कैन गवर्नर सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट? Reconsideration. Governor can't do that in the second instance. So chief minister is claiming, and the state of Tamil Nadu is claiming, governor has acted in violation of Article 200. Governor is saying, no, not really, I haven't. मेरे पास ऑप्शन था, मैं रिजेक्ट किया हूं, मैं रिटर्न ही नहीं किया हूं बिल को, और इस बिल को दोबारा नया तरीके से पास किया गया है. दोबारा जब आया मुझे लगा ये बिल रिपग्नेंट है, आई सेंड इट टू प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन. सो दोनों का क्लेम दोनों साइड से ऐसा है. अब चीफ मिनिस्टर और गवर्नर एक दूसरे से मिले टू सॉर्ट आउट द इशू इटसेल्फ. ओके. एज ए रिजल्ट, chief minister submitted a representation summarizing the following. The bills could not have been reserved for consideration of the president after the decision, State of Punjab, Principal Secretary of the Governor of Punjab, wherein it was held, governor decides to exercise the power of withholding assent to bill. Operation of first proviso has to necessarily follow. As per the State of Punjab, Principal Secretary of the Governor of Punjab, इस केस में बोला गया था, जिसमें जस्टिस परदीवाला इज ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ द बेंच. ठीक है. इसमें बोला गया था कि व्हेन द बिल एक बार सेंड किया गया है, ठीक है, next time governor has to assent. In that case, governor has to assent in the seamless situation also. He can't really deny the assent in the next time. Second, Article 200 does not confer any power upon the governor to exercise option for reserving the bill for president second time after a bill has been reconsidered and repassed by the state legislature. Chief minister is basically summarizing this thing to governor कि ऐसा नहीं हो सकता है. Governor also acted in contravention of aid and advice, because governor, without aid and advice that I showed to you in the opinion of the governor, without any aid and advice, what is required as per Article 163, governor took the decision of sending the bill to presidential reconsideration. Can you do that? Can you do that? In the light of the above representation, chief minister जो governor के साथ represent किया, he basically requested the governor to recall the 10 bills and grant assent expeditiously. In future, grant assent the bills passed by state legislature within 30 days. Act in accordance with the aid and advice tendered by the Council of Ministers. Chief minister is asking for the governor to act in that fashion, but that does not happen. Okay. Now, out of the 10 bills reserved for consideration, president withheld assent to 7 bills, granted assent to 1 bill, and is yet to consider remaining 2 bills. Okay. So that is the current situation. So this is the very important thing that is there. Nothing. The facts is completing here. There are some part of the tabular form you can very well see the number of bills, what is the status regarding this thing, you will get to see, but not more of the cases are needed, but you will get a further clarity whatever I have talked about. Which bill is in assent stage, which bill is the proviso 1 stage, which bill is the proviso 2 stage, everything will be crystal clear by this tabular form. Okay. So this is very, very important for your understanding whatever I have shared with you. Okay. Now, any query so far? Any query so far? I hope you are understanding the problem at hand. First is, what is the proper course of action for under Article 200? क्या governor सिर्फ रिजेक्ट कर सकता है रिटर्न नहीं करके? सेकंड, कैन प्रेसिडेंट के पास दोबारा भेज सकता है सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं भेज के? वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, बिना सब्जेक्टिव ओपिनियन, बिना एडवाइस लेके सब्जेक्टिव ओपिनियन गवर्नर बना सकता है? कैन गवर्नर कैन have that subjective opinion without the aid and advice of the chief ministers and council of ministers? Can he do that?
or there is discretionary power under the under Articles 163. Okay. If there is any discretionary power, can this discretionary power is subject to judicial review or not? These are the issues that are very important in this case. ठीक है. अगर गवर्नर को डिसीजन लेना है तो कितने टाइम के अंदर डिसीजन लेना है? What is the time limit regarding this aspect? Okay, what is the time limitation? What are the courses of action available to the governor? Whether the governor can reserve a bill for consideration, whether there is an express constitutionally prescribed time limit under Article 200, इसी टाइम के अंदर गवर्नर को टाइम पास करना है बिल, ऐसा कुछ है या कुछ नहीं है? Okay. Whether the governor in exercise of his power under Article 200 can only act in accordance with the aid and advice tendered to him by State Council of Ministers, or he can act subjectively with his own discretion. If he can act in his own discretion, उस मामले में क्या it is subject to judicial review or not? What is the manner in which President under Article 201 is required to act? Can President need to give assent second time when the bill again repassed by the legislature or not? These are the main issues of this particular case. These are the main issues regarding this particular case. I hope you understood the issues that are getting emerged here. Any query regarding the issues? Any query regarding the issues that you people want to ask me? Any query regarding the issues that you people want to ask me? Because I have shared with you all the aspects regarding the issues and the factual case. So factual case is very simple. Okay. Factual case is very simple. The first thing, it is regarding 10 bills first withheld by the governor. Then state legislature again repassed the bill, sent it back. Governor second time send it to president. Can governor do that under Article 200? So these are the whole topic all about. We are going to get to the main cases and main reasoning in the coming class. Okay. Hope you like the video and the class and hope you understood. Okay. If you have any query, just do let me know in the comment box. Okay. If you have any query, I have talked about in detail regarding this aspect. मैं इसके बारे में डिटेल में बात किया हूं. ठीक है. आप लोग इस वीडियो को देखो. Top 5 CLAT PG कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आई हैव टॉक्ड अबाउट. आप जाके एक बार देख लो उस पर्टिकुलर वीडियो को. मैं AMU केस के बारे में डिटेल में बात किया हूं लास्ट 3 क्लास में, उसको आप एक बार देखो. दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. ओके. और इस वीडियो में हम लोग जो बात किए अभी करेंटली रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, आई हैव टॉक्ड अबाउट द conceptual understanding regarding Article 200 and facts and issues how getting emerged and what is the problem at hand. I have talked about in detail. ठीक है. अगर कुछ query हो, give me in the comment box. Okay, I'll take up in the coming class. Hope you like the video. See you soon in the coming class. Thank you.